lift your hands right now. चलिए अपने हाथ उठाएं इस वक्त, Listen carefully. सुनिए ध्यान से। I saw God opening a door for a job for you. और मैंने देखा कि परमेश्वर नौकरी का दरवाजा आपके लिए खोल रहा है, Because I saw in the realm of the spirit, क्योंकि इन्होंने आत्मा के आयाम में देखे the spirit of poverty trying to attack your life. गरीबी की आत्मा ने कोशिश की आपकी जिंदगी पर For हमला करने many की। months, I do not know whether there's an issue concerning a job. और कई Years, Pastor. Sorry? Last 3 years. Last 3 I'm years. searching job. Today, I saw you catching a train and going for a work. Thank you. और Thank देखिए you. देख रहे हैं कि Hallelujah. आप ट्रेन पकड़कर अपने नौकरी पे जा रही हैं। This woman is going to be, she's not a working woman now. The Lord is saying to me that she will become a working woman. और परमेश्वर से कह रहा है कि ये नौकरी करने वाली महिला बनेगी। I bless you in Jesus' name. Move आपको fast, move आशीष fast. दें, Let me finish fast. Somebody raise your hands and begin to चलिए pray. कोई तो अपने हाथ उठा प्रार्थना करना शुरू करें। Somebody raise your hands and begin to pray. Lady, come over here. Green this thing. Come. आप आगे आओ। Shada kotali rakatola bazatele badoraba. 2 years you are suffering from an attack of the spirit. 2 साल से आप आत्मा के हमले से Listen to पीड़ित me. हैं। What I will tell you is this. अब बताएंगे। There is an evil power that is attacking your mind. और देखिए शैतानी शक्ति जो आपके दिमाग आपके मन पर हमला And करती because of this, है और इसकी वजह से you have no interest in doing anything. किसी भी चीज को करने में आपको कोई दिलचस्पी नहीं है। Today, आज as I pray for you, जैसे अपने प्रार्थना that करते हैं thing is going to leave you. वो चीज आपको छोड़ के निकल It जाएगी is a spirit of oppression. और ये सताव की आत्मा है। I don't know how to say this. Who is with you? आपके साथ कौन है? Stand over there, please. She is your ये कौन है आपकी? daughter. Thank you, Lord. Can I pray for you right now? आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। Listen, December, January, February, March, April, May. What is May in your family? Your birthday. Prophesy, man Yes. of God. Her birthday. Yes, first birthday. Okay, first. Okay. I don't know, but the Lord says 6 months. 6 months. This is 6 months God is giving you ये 6 महीना परमेश्वर आपको दे रहा है so that your life will be totally changed. ताकि आपकी जिंदगी पूरी से बदल There is जाए। an issue that God is healing over here और ऐसा मामला जो परमेश्वर चंगा कर रहा है यहाँ पे today. आज। Can I lay hands on you now? Close your eyes. आंखें बंद करिए। There's a spirit of oppression. क्या हुआ? सताव की आत्मा है। That's fine. I want to talk to her only, not anybody else. Quickly, I'll pray. Holy Spirit of God, stand far from her. Let the anointing of the Holy Spirit move upon this young girl. पवित्र आत्मा का अभिषेक इस नौजवान लड़की पर आए। I break the curse of the devil. शैतान के शाप को तोड़ते हैं अभी। I break the curse of the devil शैतान के शाप को तोड़ते हैं over your life. आपकी जिंदगी पर से। From today onwards, आज के दिन से the blessing of God will locate you. परमेश्वर की आशीष आपको ढूंढ लेगी। The favor of God will transform you. परमेश्वर की भलाई आपको बदल देगी। You will become from a worm to a beautiful butterfly for the glory of God. Out. In Jesus' name. यीशु के नाम में। In Jesus' name. Somebody give Jesus a shout of praise and say hallelujah. 6 months. Your life is totally changing. Pastor, the sister name is Hannah. इनका नाम हन्ना है। You were speaking about her, Pastor. You said from 2 years she's suffering with some spirit. Yes. और आपने बताया पिछले 2 Attacking her साल mind. से उस आत्मा से पीड़ित है कुछ। Yes, also that, Pastor. And she says she is suffering from her menstrual cycle. It's not clean. It's here. And मासिक धर्म की समस्या भी इनको होती I है। told you, right? आपको बताया ना? You can understand. Please understand how I cannot openly tell on the mic. I showed you over. If you have sense, you'll understand. then you also said about the evil spirit in her mind. और आपने ये भी बताया दुष्ट आत्मा इनके दिमाग में, इनके मन She में। confirms saying that whenever she sits to study, she can't remember anything. She can't study anything, Pastor. From today onwards, you will be a jewel. Amen. From a worm to a butterfly. There'll be transformation in your life. Betty, I like to catch new people whom I don't know. Listen, my problem is we Indians are not ready. If somebody says, prophesy, chalega, kuch bhi, I'll prophesy his intestines in the name of Jesus. यीशु के I नाम pray में। to God that this woman's tears, raise your hand and pray प्रार्थना for करते this girl. परमेश्वर की इस Come here, महिला बेटी, की come here, आंसू- come here, बेटी, come here fast. जल्दी से आ जा. किसकी बेटी है? तेरी बेटी है? Close your eyes. सोनी इसके chest पे हाथ रख. Come on, ladies. I pray as a father over you. एक पिता के रूप में आप पे प्रार्थना करते हैं। I pray for God's blessing upon your life. प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की आशीष आपकी जिंदगी पर। That you would be a woman who's healed. कि आप एक ऐसी महिला बनो जो चंगी हो I गई। bless you as a man blesses his daughter. आपको आशीष दे जैसे एक बाप अपनी बेटी को आशीष देता है। In Jesus' name. यीशु के नाम में You will rise.
आप ऊंचा उठेंगी। You will rise. Give her a big God bless you. From today onwards, आज से you will see joy coming back in your life. Yeah, yeah. Young man, come here. Come over here. Lift your hand to God. अपना हाथ उठाइए परमेश्वर की ओर। I want to touch your hands. आपके हाथों को छूना चाहेंगे Because in your hands, क्योंकि आपके हाथों में God is going to put many things in your life. परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी चीजें रखने जा रहा है, But you must be careful लेकिन आपको सावधान रहना होगा। to learn to handle those things. उन चीजों को संभालने को सीखना है आपको। There will be a breakthrough of finances in your life. पैसों का आशगम आपके जीवन में आ रहा है। There is many things, but God has kept for you. बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने आपको But रखा you है, are not able to access them. लेकिन आप उन तक पहुंच नहीं पा रहे। I want to pray for you. आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। Okay, I want to move, prophesy over many people today. बहुत सारे Can I touch your hands and pray? Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, this young man, ये नौजवान युवक let opportunities, breakthroughs, three things God showed me, और अवसर and आशा finances come into your life in the name of और Jesus. पैसे आपके जीवन में आए यीशु के नाम में। This is an issue that is started with your father. और ये मामला आपके पिताजी के साथ शुरू हुआ था। There is something that I don't want to speak about, but the Lord is setting things right concerning your father. लेकिन परमेश्वर आपके पिता से संबंधित चीजों को सही कर रहा है इस वक्त In the name of Jesus, यीशु के नाम में। let the glory of God come upon your life. परमेश्वर की महिमा आपकी जिंदगी पर आ जाए। Opportunities, अवसर, breakthroughs, आशयकर्म and finances और पैसे shall be yours. आपका होगा। Hallelujah. I see the month of March in your family. आपके परिवार में मार्च का महीना देखते The हैं। glory of God is moving upon your life. परमेश्वर की महिमा आपकी जिंदगी पर मंडरा रही है। This will happen. This will begin from January. और ये Hallelujah. शुरू होगा जनवरी The से। presence of the Lord will come upon your life. प्रभु की उपस्थिति आपकी जिंदगी पर Is that आएगी। your mother? Thank आपकी you, Lord. माँ है। The Lord is healing your mother right प्रभु now. आपकी माता जी को चंगा कर रहा है इस वक्त। The Lord is healing your mother, especially her toes, especially her legs and her spine. God is healing right now. परमेश्वर आपकी माता जी को As if खास like करके- some circulation, God is healing in her body. और जैसे कि उनके शरीर में जो रक्त प्रवाह को परमेश्वर चंगा कर रहा I है। break the curse that is coming against your home. उस शाप को तोड़ते जो आपके घर के खिलाफ में आया। Be healed in Jesus' name. चंगे हो जाओ यीशु के The नाम में। circulation be healed in his mother. इनकी माता जी के शरीर में का रक्त प्रवाह चंगा हो जाए। The circulation be healed in his mother. इनकी माता जी के शरीर में का रक्त प्रवाह चंगा हो जाए। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। I give you the praise and the glory. आपको स्तुति और महिमा देते हैं। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Quickly go in front right now. आगे आइए Hallelujah. जल्दी से। Pastor, you spoke about this brother, about his finances. Yes, और this आपने भाई man, के बारे में बताई पैसों के बारे God में। will bless this man from now on. और परमेश्वर इस व्यक्ति को अब से आशीष देगा। इतना है, लेकिन हाथ में इतना है. Same thing he said, Pastor. He said he's doing his business. It is there, but nothing remains in his hand. Yes. And also you said about his father Yes. आपने इनके पिताजी के बारे में बताया that he is also having some issues. और उनके भी कुछ मामले हैं। And he confirms saying that even his father's business, it's not prospering. He's trying to do it, Pastor. Did you invest like share trading and all? No, I didn't. Did anybody know? I don't know why I'm saying. Like, did you invest and lose money? No, I'm working in share markets. Okay. But I didn't invest. Okay, you're working in share markets Yeah. because I see share everywhere. Yeah. Yes. Wow. Can I tell you something? आपसे कह सकते हैं God will give you grace in two areas. परमेश्वर आपको दो क्षेत्रों में अनुग्रह He देगा। will give you not. I don't know. I'm on this thing. I'll share it. Don't invest in the paper gold. You heard what I'm saying? See, you are the share. You are the share fellow. You are the main shareman. But I will speak by the Spirit. I don't know zero about the shares. Don't invest in paper gold. Invest in real gold. You will be a man of gold. Give him a big God bless you. जोर ताली बजाएं। Lift your hands, sir. Gold will come in your hands. सोना आपके हाथों में आएगा। I said gold will come in your hands. सोना आपके हाथों में आएगा। This man will be a man of gold. और ये व्यक्ति And he सोना will वाला be a आदमी man of finance. और पैसों के क्षेत्र वाला ये व्यक्ति Two होगा। things will happen. दो चीजें होंगी। Now, this is not for you. ये आपके लिए नहीं है, This is for him. इनके लिए है। You will be an expert in crypto. You heard what I said. You will be an expert in crypto. Shares. I join my hands up. Because that is your bread and butter. Okay? See, what to tell you now? I want to see, you came over here, I will tell you the whole story. Shares disaster is coming. But if you listen to me today, two things. लेकिन अगर आप Gold सुनेंगे आज and crypto. सोना और क्रिप्टो, God, this is not for you, anybody. आप सभी के लिए नहीं है ये, It's not for you. आपके लिए बच्चे नहीं है। लोगों को बोल पहले ABCD पढ़. तू
इसका प्रोफेसी उठा के तेरा उधर तेरा इसमें सुन रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। तेरा स्कूटर है, ट्रक का बैटरी स्कूटर में नहीं चलेगा, ये अलग आदमी है, इसके लिए अलग दे रहा हूं। अगर ये सुनेगा, इसके कान है, वो सुनेगा, इसके कान नहीं सुनेगा। दो चीजें, इसके हाथ में इतना पैसा आएगा, लेकिन ये प्रभु को याद रखना चाहिए, क्योंकि इसके पास बहुत है लेकिन इसने आजमाया नहीं है। लेकिन प्रभु इसको इतना ब्लेस करेगा क्योंकि प्रभु को फॉलो करने से पहले प्रभु पीटर की बोट को भरेगा। Hallelujah. आप नहीं समझे सर? द गुडनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की भलाई, the goodness of God. परमेश्वर की भलाई, God will fill your boat first परमेश्वर पहले आपकी to नाव को show भरेगा, you that He's God, आपको दिखाने के लिए वो परमेश्वर है। and then it is your choice whether you'll follow Him or not. ये आपका चुनाव होगा कि आप उसके पीछे जाएं या नहीं। Go, give Him a big God bless you. चले जोर ताली बजाएं, This is done. ये हो गया है। Somebody shout hallelujah. Remember what I said? This share and our biscuit will go down. This. Feeling well. She has a disease of, already cancer she has. Then again, she has a blockage. And now there's a liver working 35%. So, The Lord will heal your mama. yes, amen. The Lord will heal your mama as if the Prabhu, blood aapki is baat hi beginning to circulate in her body. After the meeting, I'll pray for her. Give her a big God bless you. But remember, young man, what I'm telling you. You have a long life. You listen what I'm told you. Two things. Yes. Take what I'm saying.